हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी ऑफ लिमिट्स। तो आज मेरी जर्नी है वाइट पास यकुन रूट जो स्कैगवे से स्टार्ट होता है। तो ये जो पीछे मेरी ट्रेन खड़ी है, मैं इसमें ही आज जाने वाला हूँ। आज इसमें ही मेरा जर्नी है। तो ये 3 आवर्स की जर्नी है और मैं यहाँ से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, आप देख सकते हो। तो ये बहुत सारे पीछे क्रूज शिप खड़े हैं और ये बहुत सारी लॉन्ग लाइन लगी है जो अंदर जाने के लिए बेताब है और इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बेताब है। और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये जर्नी को करने के लिए, और मुझे अंदर जाना है जर्नी में। आप ट्रेन की आवाज़ सुन सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। इसमें आपको बहुत सारी जगह आपको स्नो भी दिखेगा, मतलब स्नोफॉल होता है, और बहुत सारी जगह आपको दिखेगा, मतलब स्नो फॉलिंग भी दिखेगा बहुत सारी जगह। तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं और देखते हैं। मेरे पास एक टिकट भी है वाइट पास का, आपको टिकट दिखा देता हूँ मैं। वही टिकट। तो ये मेरा टिकट है, वाइट पास टिकट जो मुझे मिला है। मैंने इसके लिए $10 पे किया है। ये टिकट है। तो मिलते हैं गाइस अपनी खूबसूरत जर्नी में, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुद्दे गुद्दे भाई, इधर ही खड़ा है बंदा। किधर है? आगे जाएंगे। हाँ, मॉर्निंग। चले आगे, आजा। हाँ, आगे आगे नहीं जाना। अबे इधर आना, इधर लाले, इधर इधर। Thank you, everyone. Welcome aboard. Thank you. During boarding, you may have noticed exterior platforms located at the front and rear of your coach cars. These platforms are currently closed. Once I've heard from our conductor, I'll make an announcement to let everyone know when it is okay to step outside, but until then, we need everyone to remain inside and seated. The most important rule of our train ride today is there is no crossing from car to car. This is very important, and the chains are there for a reason. You may notice a thin metal bridge between the cars called an apron, but this is not safe to stand or even step on. You will see staff who have been authorized and trained crossing from car to car, but this is not an invitation to do so yourselves. Once again, there is no crossing from car to car. Whenever you are up and about,
Make sure you maintain 3 points of contact. Never rest your hands near doorways or windows, as the movement of the train can cause them to slam shut. Additionally, you should find a very real oil-burning stove inside the front or back of your train car. These are very real working stoves, meaning they can get extremely hot, so do not touch or even adjust them. If you are uncomfortable with the temperature in your coach, instead, please speak to one of us and we'll do our very best to accommodate you. Smoking, vaping, and the consumption of alcohol are prohibited at all times on board our train, even including the bathrooms and exterior platforms. So if we do catch you smoking, we just will have to assume that means you have caught fire and take the necessary precautions to put you out. Now that we all know how to safely ride the train, I would like to warmly welcome you all aboard the famous White Pass and Yukon Railroad. We are constructed over 125 years ago during the Klondike Gold Rush. Today we'll be climbing 2,888 feet to scale the infamous White Pass summit. Our total travel time will be a little under 3 hours, and while we do briefly cross the Canadian border, we stay on board the entire time, so no, you do not need your passports. Once we reach our summit, our train will be taking a big loop in the tracks, so everyone will get to see both sides of the train ride today. You'll have one side going up, we'll make our loop, and then you'll have the opposite side going back down. The very same set of tracks we took up the mountain. I will also announce the viewpoints both times, so it truly does not matter which side you are sitting on. Alright, at this point you're As we leave Skagway behind, the Skagway River will be on our left, which we'll see often on our trip today.
Yeah.
bridge. It's coming. But Yeah. that one is scary. Yeah, go. This bridge is cute. Okay. Ah, dear. Why are we dancing? I'm because I have music. Oh, okay. There we go. This one is Ooh, it's cool as fuck. It's scary for some people, you know. I must say that if I had a boyfriend, Oh.
want that. Yeah, I want that. I see. It's coming now. It's good. I want to capture that flag. Yeah. É o quê? É eu. Workers often endure temperatures as low as negative 40 degrees and wind speeds as high as 80 miles per hour, all with just about 4 hours on average of daylight to work with. Heading from this bridge on the roads, depending on
अच्छा लगा के रखा है। यहाँ पे ये लोग सिर्फ टूर के लिए यूज करते हैं ट्रेन को, बहुत ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और समथिंग लाइक दैट इज नॉट विथ यू। Well, folks, now that everyone is inside, I did want to take a moment to go over our arrival plans. Ladies and gentlemen, today we will be making 2 stops for your convenience. Our first stop will be at our depot in downtown Skagway, and our second stop will be at the Discovery Princess. If you are not from the Discovery Princess, then you must get off at our first stop. If you are from the Discovery Princess, you may either step off the train at the first stop in town, or you can stay on board and we will take you back to your dock. We will be stopped at our depot conductor to put all of the steps down, and they cannot do so if you are out on those exterior platforms waiting to get off the train. So please wait to be waved off by one of our crew on the ground, or you can wait to hear from me, letting you know that all of the steps have been let down. Be very careful when stepping off of the train, and please use the hand railings provided. Keep in mind that many find it easier to go down backwards like they're on a ladder, and if you need any assistance, please do not hesitate to flag down one of our train personnel. This is an active railroad, so please do not cross over the railroad tracks. If you must get across, please find and use the nearest crossing and look both ways before advancing. Thank you. स्टेशन और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं और यहाँ लोग अभी जो नेक्स्ट ट्रेन आने वाली है उसकी तैयारी में लगे हैं। छोड़ा भी रहे तो हमने अपनी जर्नी कंप्लीट कर दी है। स्टेशन वाइट पास या जो 1898 में एस्टेब्लिश हुआ था।
तो ये ट्रेन में से सब तो पैसेंजर है वो उतर रहे हैं और उतर के फिर ये लोग जा रहे हैं डाउनटाउन, जहाँ पे शॉपिंग करेंगे और डाउनटाउन को एक्सप्लोर करेंगे। ये है स्कैगवे अलास्का का वाइट पास यकून रूट रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल जगह है ये। और तो ये है, ये वो ट्रेन है, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी भी है, जैसा हैंडीकैप है, आप डिसेबल है तो आपके लिए ये क्रेन है, क्रेन से आप उतर सकते हो। गाइस मैंने आज ये वाइट पास या रेलवे टूर मैंने किया है स्कैगवे में, और आज ये बहुत बड़ा मज़ेदार था, मैंने एंजॉय किया। और बहुत सारे जैसा ये रेलवे बिल्ड हुआ है, और ये 1888 में ये बिल्ड हुआ है, और ये रूट है। और जब भी आपको इधर आना होगा आप आ सकते हो। और ये ट्रेन में आने के लिए मैंने $10 पे किया है, US $10। और अब मुझे बहुत सारा डिस्काउंट नहीं मिला, इसलिए मुझे $10 पे करना पड़ा। और आप ऐसे जाओगे तो आपको $150 आपको पे करना होगा। तो क्योंकि हम लोग क्रू हैं, हम लोग को बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है, तो इसलिए हमने $10 पे किया। और ये जर्नी बहुत अमेजिंग जर्नी थी। तो अब नेक्स्ट टाइम, और ये मैंने कैब भी लिया है यहाँ से, ये कैब मैंने लिया है $10 की। आपको ट्रेन में ये कैब मिल सकती है और आप पे भी कर सकते हो। और जब भी आप ध्यान रखिए, आप कैश एक्सेप्ट नहीं करते, आपको कार्ड से पे करना होगा या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आपको पे करना होगा। वाइट पास यकून रूट का एक इंजन खड़ा है ब्लैक कलर का। तो गाइस बताइए मेरी जर्नी आपको कैसी लगी। आप मेरे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नी में, मेरी नेक्स्ट जर्नी में। ओके बाय, थैंक यू।